CBSE Mathematics Class 11 Chapter 4 Exercise 4.1 Question number 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 1 into 2 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus dash dash n into 2 raised to power n is equal to n minus 1 bracket closed 2 raised to power n plus 1 plus 2. We have to prove that this proposition is true for any n belonging to natural number. Let or say Pn is equal to 1 into 2, 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus dash dash n into 2 की power n is equal to n minus 1 2 raised to power n plus 1 plus 2. First of all, let us substitute n is equal to 1. So left hand side में हमें क्या मिलेगा 1 into 2 that is 2. Let us substitute the value n is equal to 1 on the right hand side. So you see here n minus 1 2 raised to power n plus 1 plus 2. So here 1 minus 1 2 raised to power 1 plus 1 plus 2 and it will be equal to 2. So left hand side and right hand sides are equal. It means that P1 is true. It is true for n is equal to 1. Now assume that the pk will be true. If pn is true, then pk will be also true. So now here write down 1 into 2, 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus dash dash plus k into 2 की power k is equal to k minus 1 2 raised to power n plus 1 plus 2. Now if it is true for k, let us prove or the proposition is true for k plus 1. So what you do that you write down all the steps of pk and add it one more term that is k plus 1. So it will be equal to 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus dash dash plus k into 2 की power k plus k plus 1 2 की power k plus 1 and it will be equal to in bracket k plus 1 minus 1 bracket closed 2 की power k plus 1 plus 1 plus 2. So left hand side देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो pk की वैल्यू है. तो जब pk की वैल्यू है ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में तो हम राइट हैंड साइड को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक. मीन्स 1 into 2 से लेकर के k into 2 की पावर k तक. तो दैट विल बी इक्वल टू k minus 1 ब्रैकेट क्लोज्ड 2 raised to power k plus 1 plus 2. तो ये तो हो गया आपका pk की वैल्यू. नाउ द टर्म विच वी हैव added here that is k plus 1 into 2 raised to power k plus 1. अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 की पावर k plus 1 यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 की पावर k plus 1 बाहर ले लीजिए. अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा k minus 1 प्लस k plus 1 और ये 2 हम साइड में रख दिए हैं प्लस 2. सो 2 की पावर k plus 1 इंटू 2k ब्रैकेट में सॉल्व किया तो 2k आया प्लस 2. सो k inside the bracket 2 raised to power k plus 1 plus 1. क्यों देखिए 2 बार आया है 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ.
देखिए 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2, सो इट विल बी इक्वल टू k, ये वाला k है आपका, इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2. दिस implies that k plus 1 minus 1 into इधर देखिए k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2. अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो हमें चाहिए राइट हैंड साइड में उस फॉर्म में आ जाए. देखिए 2k प्लस 1 एज इट इज हमने लिख दिया है. k के लिए हमने क्या किया है, k प्लस 1 माइनस 1 कर दिया है. k में एक 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया. सो k प्लस 1 माइनस 1 जो हमारे फार्मूले में है राइट हैंड साइड में, देखिए आपका k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1. आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट देखिए 2 की पावर k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2. It is your right hand side. Hence it is verified that the given proposition is true for n, for all n belongs to natural number. Now come to the question number 9. Here proposition is given, that is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 2 की पावर n, that is equal to 1 minus 2 की पावर n, 1 upon 2 की पावर n. Now substitute n is equal to 1 on the left hand side, so we will get 1 by 2, p1 will be equal to, that is 1 by 2. right hand side में देखते हैं 1 minus 1 upon 2 की पावर 1, it will be equal to 1 by 2. So left hand side and right side both are equal, so the left hand side is equal to right hand side. It is true for n is equal to 1. Now we assume that the pk will be also true if it is pn is true. So in place of n, now we substitute k. So 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus dash 2 upon 1 upon 2 की पावर k is equal to 1 minus 2 की पावर k. Now if it is true for pk, then we just prove it that it is also true for pk plus 1. So you see, हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म्स लिखेंगे. इन एडिशन टू दिस वी हैव टू राइट वन मोर टर्म, दैट इज 1 upon 2 की पावर k plus 1. Here you see 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus dash plus 1 upon 2 की पावर k plus 1 upon 2 की पावर k plus 1, and it will be equal to 1 minus 1 upon 2 की पावर k plus 1. Now you see the left hand side only. तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से लेकर जो ब्रैकेट किए बनाया हूँ अंडर ब्रैकेट अंडरलाइन दे करके, इट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ पी के, दैट इज 1 minus 2 की पावर k प्लस 1 upon 2 की पावर k plus 1, 1 minus 2 की 1 upon 2 की पावर k plus 1 upon 2 की पावर k into 2 की पावर 1, and it will be equal to 1 minus 1 upon 2 की पावर k in bracket 1 minus 1 by 2. This will be equal to 1 minus 1 upon 2 की पावर k into 1 by 2. देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1 by 2 मिलेगा. ये तो ऑलरेडी हमारे पास है. सो डिनोमिनेटर में देखिए 2 की पावर k है, 2 की 1 upon 2 है. सो बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगा. दैट इज 1 minus 1 upon 2 की पावर k plus 1, and it is your right hand side. This implies that it is true for k plus 1. Hence it is verified that the given proposition is true
for all n belongs to natural number. Now come to the question number 10. Question number 10, the proposition is like this: 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dash dash plus 1 upon 3n minus 1 in bracket close 3n plus 2, and it will be ultimately equal to n upon 6n plus 4. Say that the proposition n, that is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dash dash plus 1 upon 3 into 3n minus 1 bracket close in the second bracket 3n plus 2 bracket close, and it will be equal to n upon 6n plus 4. Now we prove it that n is equal to 1. We examine it that whether it is true or not. Let us substitute pk. So it will be 1 upon 2 into 5, that is equal to 1 upon 10. Now substitute the value of 1 on the right hand side. We will get 1 upon 6 into n plus 4, that is 1 upon 10. Here we see that the left hand side is equal to right hand side, so it is true for n is equal to 1. Now if Pn is true, then Pk will be also true. So write down in terms of k, that is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dash dash plus 1 upon 3k minus 1 bracket close in the second bracket 3k plus 2, that is equal to k upon 6k plus 4. Now if pk is true, let us prove that pk plus 1 is also true, that is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus dash dash plus 1 upon 3k minus 1 bracket close in the second bracket 3k plus 2 plus the new term is here, that is 1 upon 3k plus 1 bracket close minus 1, 3k plus 1 plus 2 in the second bracket. Now from this point to this point, it is already, we have proved that it is already equal to k upon 6k plus 4. So we can write down for in place of this, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आया है उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3, ये न्यू टर्म है, दैट इज 3k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इन द सेकेंड ब्रैकेट 3k प्लस 1 प्लस 2. देखिए हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा है, सेकेंड टर्म में देखिए सॉल्व कर दिया है 3k प्लस 2, 3k प्लस 5. अब देखिए यहाँ पर 2 हमने बाहर लिया है, सो 3k प्लस 2 निकलेगा हमारा, 3k प्लस 2, यहाँ पर भी 3k प्लस 2 है. तो डिनोमिनेटर में हमारे को एक फैक्टर मिल रहा है कॉमन, तो हमने उसको कॉमन लेकर रख दिया 1 अपॉन 3k प्लस 2. रिमेनिंग टर्म्स को लिखा है k अपॉन 2, देखिए k अपॉन 2 ईयर प्लस यहाँ पर देखिए 3k प्लस 2 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट हो गया, कॉमन हो गया है, 3k प्लस 5, 3k प्लस 5. नाउ टेक द LCM and solve it. We will get here 1 upon 3k plus 2 inside the bracket, that will be the 3k square plus 5k plus 2 whole upon 2 into 3k plus 5. Now you see here 1 upon 3k plus 2, that is equal to, इसको सॉल्व किया और फैक्टराइज किया 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2, सो 3 2 जा 6 हो गया. उसको हमने सॉल्व किया 3k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 और अपॉन 2
into 3k plus 5, and it will be equal to k plus 1 upon 6k plus 5, no sorry 6k plus 10. And again you see, take 6 common, k plus 1 upon 6k plus 1 plus 4. अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 6k plus 6 plus 4. So in place of 6k plus 10 I have written it here in order to take the result as required, which is mentioned in the RHS. राइट हैंड साइड में जैसा मेंशन किया हुआ उस तरह से हमने निकाल दिया k plus 1 in bracket 6k plus 1 plus 4, and it is equal to right hand side. Hence n is equal to k plus 1 is true. Therefore the given proposition is true for n, for all n belongs to natural number. Now come to the question number 11, that is 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus dash dash plus 1 upon n into n plus 1 bracket closed into n plus 2, that is equal to n outside of the bracket, that is n plus 3 in the second bracket. So whole upon 4 into n plus 1 into n plus 2. Now the Pn, say Pn proposition for n is equal to 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus dash dash plus 1 upon n bracket में n plus 1 into n plus 2, and it will be equal to n into n plus 3 whole divided by 4 n plus 1 inside the bracket, in the second bracket n plus 2. Now substitute or examine it for n is equal to 1. Now you see the P1 that will be equal to 1 upon 2 into 3, the first term, that is 1 upon 6. Now put the value of n on the right hand side. We will get 1 outside of the bracket, there you see n, and n plus 3, that is 1 plus 3 whole divided by 4 in bracket 1 plus 1, in the second bracket n plus 2, that is 1 plus 2. Solve it, you will get 1 upon 6. So the right hand side and the left hand side both are equal. Here left hand side and right hand side are equal. It is true for n is equal to 1. So it will be equal to, it will be also equal to Pk. Pk is equal to 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5 plus dash dash plus 1 upon k plus 1 in the second bracket k plus 2, and it will be equal to k into k plus 3 whole divided by 4 in the first bracket, that is k plus 1 and k plus 2. Now if it is true for k, let us prove for pk plus 1, that it will be equal to 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4, 1 upon 3 into 4 into 5 plus dash dash 1 upon k in bracket k plus 1 k plus 2. This is the upper statement. Now the additional term is 1 upon k plus 1 in the second bracket, that is k plus 1 plus 1 in the second bracket, that is k plus 1 plus 2. So from this point to this point we can write the right hand side. You see the left hand side is already mentioned here. So this can be replaced by the right hand side. So what I have done here, that k in bracket k plus 3, you see k plus and k into k plus 3 whole divided by 4 k plus 1 and k plus 2. Now the new term which we have recently added, that is 1 upon k plus 1 in the second bracket k plus 1 plus 1
in the second bracket, that is k plus 1 plus 2. Now you can take common, you see, k plus 1 and k plus 2 in the both terms present already. So I have taken it common, that is 1 upon k plus 1 into k plus 2. The remaining, that is k plus 4, k in bracket k plus 3 upon 4 plus 1 upon k plus 3. Solve it. Here we will get 1 upon k plus 1 into k plus 2. Inside the bracket, you see, k plus 3 का whole square plus 1 into 4 whole divided by 4k plus 3. We further solve it. 1 upon k plus 1, k plus 2. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, सब स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया, k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 4k प्लस 3. अब देखिए यहाँ पर k स्क्वायर हमने फैक्टराइज कर दिया इसको, k क्यूब को. इस फैक्टराइज करने से पहले मैं बताता हूँ क्या किया हूँ मैंने. जो ऑड पावर का कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पर ऑड पावर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और ये 9k, तो 9 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द ऑड पावर, दैट इज k का पावर कितना 1 है, और k क्यूब का पावर 1 है, सॉरी 9k का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, और इसका पावर 1 है. सो इट इज आल्सो ऑड पावर, और k क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और इसका पावर क्या है, 3 है. सो दीज आर द ऑड पावर. सो जस्ट वी ऐड 1 प्लस 9 दैट इज 10. रिमेनिंग टर्म के जो कोफिशिएंट है उसको ऐड कीजिए, यू विल गेट 6 प्लस 4 दैट इज 10. इट मीन्स दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ k प्लस 1. So first of all you write down k plus 1 3 times, k plus 1, k plus 1, k plus 1. After that we need k cube, so write down the k square before the k plus 1. After that here you will get k square also. Now we need 6k square, so you write down 5k inside the bracket k plus 1 plus 4k plus 1. So you see the k plus 1 has been taken outside, k plus 1 here you see the k plus 1 बाहर ले लिया मैंने और इसको डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया, k plus 1, k plus 1, k plus 1 कैंसिल कर दिया. तो न्यूमरेटर में क्या मिला हमारे को, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई k plus 2 plus 4k 4 in bracket k plus 3. That will be equal to k plus 1, k plus 4 whole divided by 4 k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2. So ultimately it will be equal to k plus 1, k plus inside the bracket, that will be k plus 1 plus 3 whole upon 4 k plus 1 plus 1 bracket close. In the second bracket you will get the k plus 1 plus 2. So it will be your right hand side. Hence n is equal to k plus 1. It is true it is true. Therefore the given proposition is true for n. For all n belongs to natural number. Now come to the question number 12. You see the question number 12, the proposition is given, that is a plus r plus a plus ar square plus so dash dash plus a r raised to power n minus 1, and it will be equal to a r power n minus 1 whole upon r minus 1. So it will be equal to, say, Pn, that is a plus ar plus ar square plus ar raised to power n minus 1, and it will be equal to a r raised to power n minus 1 upon r minus 1. Left hand side, that is P1, we will examine it.
So P1 is equal to A. RHS is equal to A R1 minus 1 whole divided by R minus 1 upon A. So LHS is equal to RHS. It means that P1 is true. Pk is equal to A plus AR square plus AR k raised to power minus 1 whole will be equal to A into in bracket R raised to power k minus 1 R raised to power k minus 1 whole divided by R minus 1. Now we prove it for Pk k plus 1. It will be equal to A plus AR square plus so and so AR raised to power k plus minus 1 whole upon plus AR k plus 1 minus 1 and it will be equal to A in bracket R raised to power k plus 1 minus 1 whole divided by R minus 1. अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो टर्म है हम इसके लिए राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है सेम प्रोपोजिशन का पार्ट लिख देंगे. सो ए इंटू आर रेस्ट पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस दिस इज द न्यू एडिशनल टर्म दैट इज ए आर रेस्ट पावर के प्लस 1 minus 1 plus 1 and minus 1 will be cancelled. So we will get a into r raised to power k minus a whole divided by r minus 1 plus a r raised to power k and it will be equal to a r raised to power k minus a plus a r raised to power k in bracket r minus 1 upon r minus 1. It will be equal to a r raised to power k in bracket we write down 1 plus r minus 1 minus and plus will be cancelled bracket closed minus a upon r minus 1. So here a r k plus 1 minus a whole divided by r minus 1 and it will be equal to a in bracket r k plus 1 minus 1 whole divided by r plus 1 and it will be equal to right hand side. Hence n is equal to k plus 1 is true. Therefore the given proposition is true for n for all n belongs to natural number.